I've seen this thing working for me. Simple and crazy as it sounds. Yeah, this is the book, guys. Clearly, no one respects my rockets or something that I don't want to wear. All I can think about is food right now. Hi guys, good morning. So I'm with Blush. We're matching. So guys, आज का कोई plan as such नहीं है, but there's so much that I need to do today. I don't know how I'm gonna manage it, but somehow मैंने एक चीज़ ना, I've seen this thing working for me, and this is what my therapist taught me, that whenever you are overwhelmed with a lot of emotions, or you don't know where to start, or you feel like, oh god, I have so much to do, just start with one task in hand. For example, get up and just brush your teeth and be there. As simple and crazy as it sounds. That's what I'm gonna do. So I'm gonna drink my morning water. I wanted to show you guys the book that I'm reading right now. मैं दीक्षा के साथ travel कर रही थी, तब मैंने airport से ली थी ये Set on You. जब मैंने start करी थी, although मैं इतनी intrigued नहीं थी और इतनी involved नहीं थी book में, but I've almost finished more than half of the book. I really want to inculcate this habit of reading daily. I think अभी तक मेरा record बहुत अच्छा रहा है, although we're gonna exclude the eye injury वाला few days. So yeah. Also guys, I don't know if I've addressed this on YouTube. I slipped in washroom and this happened. मुझे डॉक्टर ने बोला कि मेरी नर्व फट गई थी एक, एंड देन द ब्लड जो ऐसे स्ट्रीम होते होते यहाँ आ गया. थैंक गॉड ब्रेन की साइड बाहर नहीं गया. वहाँ ज़्यादा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता. तो आई एम लाइक थैंकिंग गॉड राइट नाउ. ऑल्सो गाइस, आई एम वेयरिंग दिस फ्रॉम H&M इफ यू आर वंडरिंग. आई गॉट दिस एंड मैं कल ये पहन के गई थी डैड के पास. रात को लूडो खेल रहे थे सब लोग. डैड मुझे बोलते हैं क्या कर्टन पहन के आई है? कर्टन लग रहा है? हंस रही है. उसको देख लो गाइस, इसको देख लो. मैं सांता क्यूट हूँ. Now we're gonna finish some work. Guys, there's a song I'm pretty sure सबने सुना होगा, Victoria's Secret, and it's such a great song. It reminds me of the fact कि मेरे बचपन में everyone was so worried about their body image, and especially girls. I don't know, completely off topic. Clearly no one respects my vlog. I'll start again guys. So I was just saying, ये song ना इतना कुछ remind करता है ना, just to love yourself, love your body, love who you are, and more than that, जब से मतलब आप बड़े हो रहे होते, especially girls, no one actually says it, but mostly I've seen it. If I compare men and women, हमेशा जब हम बड़े हो रहे होते हैं, especially young girls, इतना impressionable होते हैं उस time पे, but हम society में देख के, ads देख के, TV देख के, कहीं ना कहीं हमारे mind में ingrain हो जाता है कि ओ हमारी सारी worth beauty से है, we need to be stick thin, we need to be size 0, and ऐसा इतनी गलत mentality होती है ना. I wish I could go back and tell my younger self, just love yourself, love your body, because actually your body does so much for you. And obviously there are days when I also look into the mirror and वो बहुत मुश्किल से वो पैटर्न जाता है, बट आई रिमाइंड माई सेल्फ कि दिस बॉडी इज डूइंग सो मच फॉर मी. आई कैन वॉक बिकॉज ऑफ माई लेग्स. मतलब वो हेटरेट को चेंज करने के लिए ना, आई हैव जस्ट स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक इट इज हेल्पिंग मी. नॉट गोना लाई, मैं ऐसे ऑप्टिमम लेवल पे रीच नहीं कर चुकी, बट आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ. समहाउ जिम हैज अ लॉट टू डू विद इट. द मोर आई लिफ्ट, मुझे ऐसा लगता है ओ आई एम सो मच स्ट्रॉन्गर, मैं और कर सकती हूँ, मैं और कर सकती हूँ. ऑल्दो इफ आई गो बैक, आई स्टार्टेड इन अगस्त सितंबर, उसके हिसाब से मुझे 6 months हो गए हैं. एंड जब भी आप मतलब 6 months से कोई वर्कआउट कर रहा होता है, एवरीथिंग इज सेम, बट माई मेंटालिटी has changed. Like there's not much difference in me, but I've changed as a person, and it has to do with gym. I just go there for 1 hour and मुझे बड़ा मजा आता है. Like I'm actually posting every day. मैं रोज पोस्ट भी करती हूँ, जैसे consistently अच्छा भी लग रहा है. I'm living up to my own promises. So yeah, completely topic change हो गया. But if you are younger to me, if you are in your school, college, just know you're so freaking beautiful. I know आप जब सुनते हो आपको लगता है ऐसे ही बोल रहे होंगे, क्लीशे है, but you're so beautiful. And the day you start accepting the way you are, आपको लगे ना यार मैं ऐसी हूँ, change नहीं होने वाला है. Obviously, you can become a better version of yourself by working on yourself daily. But this is what I have. This is the foundation. मुझे इसी को प्यार करना. Guys, मैं काफ़ी pumped थी जब मैं बता रही थी. So I'm gonna continue. Yeah. So I was saying, जब आप सोच लो ना कि यार मुझे इसी को प्यार करना पड़ेगा, you will actually find ways to love yourself. It's a journey, but it's one hell of a journey. Once you start loving yourself ना, किसी और को भी आपको बुरा ट्रीट नहीं करने दोगे. Like you will realize your worth. Comment down below. Like 2 things you love about yourself. Let's try to change your mind in a positive way. मतलब obviously हम पूरा दिन इतनी सारी चीजें बोलते हैं. This is what I hate about myself. मेरा दिन ऐसा गया, मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ वो. Why not like start by doing something small? Do this on a daily basis, or at least try to list 2 things that you're grateful for and 2 things that you love about yourself in the comment section down below. It's so cute. You know you're beautiful. She clearly wants to sleep, so I let her be. And now I'll get back. Okay.
Okay guys, quick intermission. Thank you to Opulence Card for sponsoring this portion of the video. I've recently restarted socializing a lot, going to dinners, parties at some of the upscale outlets in Delhi. After a few years of hustling, I've built a kind of lifestyle wherein I love to indulge in activities, possessions that make me feel good inside out. And as you might know, I'm someone who loves shopping at my favorite brands like Calvin Klein, Satyapal, House of Masaba, Kalki Fashion, and I'm sorted while going to fine dine restaurants, pampering myself at salons, spas because of the exclusive discounts that the Bob World Opulence Card offers. The card has become my gateway to hashtag the new luxury because it helps me enjoy my lifestyle to its fullest. I highly recommend you check the Bob World Opulence Card right now. Okay, now back to the vlog. Okay guys, I'm ready. I'm gonna reach in 10 minutes I think, and I saw a cab here and I got so happy because there was a woman driver who was driving the cab. I don't know, small thing, but I'm really glad that girls nowadays are going out and crashing their goals. And yeah, oh my god, the light, sorry about that. This is the fit. Warm रहने के चक्कर में I've put on so many layers that I feel so hot right now, but vibe with the music. Hi guys, so I'm here at Sid's office. I'm actually looking for my outfit for the awards night, which is in Goa. I'm really excited. I found something, I liked something, I tried it on. वो अभी alteration के लिए गया हुआ है. I think I'm almost done. मैंने जितनी देर सोची थी उससे बहुत जल्दी हो गया. I quickly got done. But I love all the pieces, so I'll show you the. Sorry guys, there's phone ringing in the background, but this was something that I really wanted to wear, but size issues guys, तो मुझे कुछ और ढूंढना पड़ा है. But I absolutely love the outfit that I've selected, and मैंने कुछ ऐसा पहना भी नहीं, so I'm really excited. अब मुझे उसके around ना, like I have to select the jewelry, think about hair, makeup, so hopefully the look will turn out nice. In my head, it's there. I'm gonna leave in some time, but guys, this is the fit. This is from H&M, this is from Zara, this is from Zara. The boots are from Charles & Keith, the bag is from H&M, the glasses are from Prada. Guys, we both are ready हैं. हमें इतनी देर हो गई है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. और मेरे को सुशी की क्रेविंग हो रही है ना, इतनी गंदी वाली. मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है. मैंने इसको बोला था जल्दी रेडी हो जा, मैं इतनी देर से रेडी बैठी हुई थी. गाइज हम जा रहे हैं शिवेश और आशी के साथ डिनर पे, एंड शिवेश ऑलरेडी पहुंच गया. वो बहुत पंचुअल है, मुझे बड़ा डर लग रहा था उसको बोलते हुए कि हम पहुंचने वाले हैं. मैं 10 मिनट्स में निकल रही हूँ. मैं बहुत देर से उसको लटका रही थी, बट दीक्षा कैन ओनली थिंक अबाउट सुशी राइट नाउ. अब इतने दूर है, किसी को देखो बोलती वॉक करके चल लेंगे. अभी एक्चुअली इतना ट्रैफिक है, कार पे दूर है तो वॉकिंग सोच ले. अभी हम बहुत ट्रैफिक है, तो मैंने इसको एक्चुअली बोला था कि दीक्षा वॉक करके चल. और ठीक है ना, सो रही थी, मैंने इसको उठाया कि उठ जा, टाइम हो गया, क्योंकि मैं रात को सोई नहीं. एंड मैं अभी का टाइम हुआ है. फिर ना आशी का मैसेज आएगा इसकी, आई लीव इन 30. बताओ, वो 30 मिनट में निकलेंगे, तूने मुझे क्यों इतनी जल्दी उठा दिया. बट गाइस, लगता है दिल्ली में ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी. बॉम्बे से बहुत कम है दीक्षा, वी ग्रेटफुल. बैंगलोर में भी बहुत होता है. बॉम्बे और बैंगलोर वाले नीचे कमेंट और बोला, अच्छा यहाँ पर अगर हमें 8-10 किलोमीटर दूर जाना हो तो कितनी देर लगती है यूजुअली. जैसे अगर इवनिंग आवर में निकलोगे तब ऐसा होता है, वरना आई डोंट थिंक सो. ऐसे आफ्टरनून में 1-2 घंटा ट्रैफिक होता है, रात को 1-2 घंटा, वैसे इतना नहीं होता. हाँ ट्रू. एंड इस रोड पे ज्यादा होता है. All I can think about is food right now. बिल्कुल स्नेल की स्पीड पे हम चल रहे हैं, बट होपफुली विल रीच. एंड आशी दिल्ली आई हुई है बहुत टाइम बाद. कोई वो कभी तो चलता होगा ना. एंड मुझे ना ऐसे स्नैपचैट पे भी सब बोल रहे थे कि आशी आई हुई है, आप लोग मिल लो है वो. एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारा प्लान भी बन गया. वी आर गोना टॉक एंड हैव गुड फूड. और हम जा रहे हैं बारदोस. बाय गाइस, सुशी खाएंगे. आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, आई एम लविंग इट. किसी ने मुझे आज कॉम्प्लीमेंट दिया आज. यस. और मैंने गाइस आज अपना पैर भी तुड़वा लिया, मतलब कुछ नहीं बचा. और किसी ने ना मेरे को स्नैपचैट पे लिखा था, दीदी जेन्युइनली ना तेरी पहले आंख टूटी, अब तेरा पैर फूटी, अब तेरा पैर टूटा, तुझे अपनी नजर उतरवा लेनी चाहिए. जस्ट क्लेंस योर बॉडी. ऐसे ऑरा क्लेंस कराना है गाइस मुझे, बट बैड वाइब्स होती है. हाँ, तो किसी ने लिखा, दीदी हंसना तो नहीं चाहिए, बट मुझे हंसी बड़ी आ रही. पहले आपकी आँख फूट गई, अब आपका पैर टूट गया, बट इट्स ओके, इट्स ओके. मेरे को केटल बेल लगी थी और मुझे ना पेन हुआ था उस टाइम पर. मैंने सोचा नहीं कुछ नहीं हुआ. फिर जब मैं ट्रेडमिल पे एलिवेशन पे चल रही थी ना, तो मुझे अंदर ना ऐसे फील हो रहा था. बट या केटल बेल लगी है गाइस, बट इट्स ओके. एंड या आई एम लविंग माय मेकअप आल्सो. मैंने जो सुबह का कर रखा था, सुबह गई थी जी के, वहाँ कुछ काम था, एंड उसके बाद मैं जिम गई थी, एंड उसके बाद आई एम हियर. एंड तब से जो हुआ हुआ सुबह से मैं उसी पे करे जा रही हूँ.
सुबह से कुछ नहीं खा रखा आपने गाइस। ओनली सुशी। मैंने भी कुछ खाया, प्रोटीन शेक पिया था मैंने भी वो पिया था उसका। अच्छी बात नहीं है गाइस, मैंने प्रोटीन बार खाया था। तो प्रोटीन गंदी प्रोटीन बार खिलाई है। मुझे तो सही लग रहा था। शट अप गाइस पता है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या आपको पता हो ना, आप ऑन द गो अपने पास प्रोटीन बार्स और ये सब रखने चाहिए। बहुत हेल्पफुल चीज होती है पता है, जब आप मील ना खा सको तो। सिसी ने पहना जी क्लोथिंग। मेक लव, मेक आर्ट, मेक I आउट like the third one. एंड मेक फनी। मैं वही बोल रहा था, इसने फोर्थ कैसे नहीं बोला? Fourth first पे then make love, then make out, then make out. इग्नोर माई नेल गाइस। आप अपनी प्रायोरिटीज नीचे लिखना, 1 2 3 4 है, आप लिखना कौन से ऑर्डर में आपकी प्रायोरिटीज है, ठीक है? यू लुक सो क्यूट। Thanks. I just want to have sushi. Count the number of times Diksha said sushi. Okay guys, bye. Guys, we're finally here. आशी कितने टाइम बाद मिल रही है? हम सीजनल मिलते हैं। Actually, every 6 months है ना, on an average. और डियर से तो मैं अभी मिली थी डिनर में। Zoom कर रही हूँ मैं। God, yum.